Rajput. Hey, Sushant. Please, grab a seat. It's great to have you with us on a day when India has actually won a test match as opposed to losing it, Yes. because after MS Dhoni. Are you feeling yourself somewhat confused in identity? Are you a cricketer or a film star? Do you sometimes have people confusing you, one for the other? Yeah, people do. But these days I'm actually playing a con man. So I'm thinking like that. So from a cricketer to a con man. Yes. Small advice from all of us. It's one thing if people are mistaking you for a cricketer. When they start mistaking you for a con man is when you've got problems. Yes. So you've got to be careful as to how realistic you're going to make this. Trying to. Well, it's great, Sushant, to have you with us. And you, I think, saw some of the rules of that. So it's a contest. Get kids involved. Yes. Make it engaging for them. Make it a contest for them. Make it a game that they can go out and compete. And while competing with each other, you try and change the country. Does the idea sound fundamentally sound to you? Pretty much, because the kind of conditioning we have in school, anything that is important to us has to do also with the right kind of acknowledgement. And I think this is a very great thing, because what we are doing is we are creating something which benefits everybody in the community, and at the same time, individuals are getting acknowledged for that. Right. So let me get you in on the broader aspects of when you look around at the country, when you're seeing the problems that there are in the environment and cleanliness. These are issues that perhaps you should have paid a lot more attention to it a long sooner. Yeah, it's a thing, and specifically with our country, I guess, because Yeah. because somehow we are very smart, or I can say as smart as anybody in the world, but that's individual. But when we are public, when we act as a group, we somehow manage to act as dumb people. Yeah. So this is what it is, and it can be. See, it is a tendency. It is a normal, natural tendency. It can be explained from subjects like mathematics, also game theory, Yeah. or behavioral economics. But at the same time, I think this tendency in India is much greater than anywhere else. So, Suman, that's probably the reason why we've decided to get kids into it. Because let's face it, this generation is far smarter than any generation which has preceded them. I agree. Would you agree? Absolutely. I'm surprised all of you aren't agreeing with that. You do agree, right? All right. Being smart is one thing. Being committed and smart is another. So that's really what this campaign is trying to do. It's fine to be smart. True. It's fine to think you're tech savvy, and it's great you're sending pictures to each other on Facebook. But don't just use Facebook and devices to bitch about how bad things are. Do something about it. That's the aim, right? That's the aim. And why did you think of getting kids involved? Okay. So let somebody else answer that. Kids, who won the game today? Good Lord, yeah. Who won the game today? India. Can't hear you, man. Where's the Josh, yaar? Who's won the game? A little better. Who won the game today? India. Exactly. This is something, passion. We can get anything on board, any kind of resource. But this is something we can't get from anywhere else. That's the reason we decided that kids have to be in. Okay. Of course, the way that this game was so engaging, you could have probably asked adults and we'd have screamed also. It was a rather exciting game. So, perhaps not the best example, but yeah, I get it. The passion that children have and the commitment is huge, which is why you make it a competition. Absolutely. And I'm sure many of them are asking, look, this is all very well. 6 months, you're going to make us compete with each other. Right. There is going to be great outcomes of that 6 months. That Absolutely. we're going to hopefully have a cleaner environment. We're going to have, all of that stuff. There's going to be protection from mosquitoes. There's going to be clean-up drives. Trees will be planted. Absolutely. हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर हम जीते? So, guys, there are 5 things which you need as a priority in life, as a student. The first and foremost is your country. The second is your society. Third is your school. Fourth is your family and friends. And last
but not the least, is you yourself. In this specific program, the way we have made it, right, you can actually ensure that everybody is there as number one in the priority list. This is what you're doing. You can make the planet, the country, the society a little more greener, a little more cleaner, a little more healthier. You can win prizes in the process. You can leave a better world for your loved ones. And obviously, in this whole process, when you spend time with your friends, when you do your school proud, you will also end up with individual, like Vikram has already mentioned, it is a gifts galore, man. You just have to do something, remain focused, and there is something for everybody. Yeah. How, when it comes to the sanitation part of it or the cleanliness part of it, why is it that you think A, toilets have not been constructed, and B, even more seriously, you have garbage lying in all corners of the country and people have not really been focusing on cleaning it up? See, I think if I wear my management corporate hat, one has to understand that any change has a structure. If you just wish for the change to happen, it's not going to happen, so you need to follow a structure. And the structure which management gurus have come together is the fact that it's a three-step process. And the first step was about creating huge amount of dissatisfaction with status quo, which is what I think is happening in the environment, that dirt is not allowed, the kind of country we have is not good enough. And I think a lot of that has happened. The second is to create a vision of tomorrow which is so compelling that people will jump out of their bed and go work for that vision. And I think to a certain extent we are progressing towards that, but not enough. And that what is that vision and what is in it for me? And I think this campaign is extremely good from the fact that it's trying to connect what is in it for me. So it's not a Prime Minister vision or Government of India vision, but it is connected with me. The third step is an important step in terms of if I am frustrated with today, excited about tomorrow, what are the specific steps which I need to take to go from here to there? And I think the problems are well stated, the future direction is clear, the steps to be taken to go from here to there are not clear, and that's where this campaign comes in, where you are saying take micro steps. And if we take 1 million micro steps, then 1 billion people's life will change. And that's what this campaign looks like to be, and it's very, very exciting. Okay. तो सुशांत जी, जो भी लोग हमें देख रहे हैं अभी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं, बेहतर इंडिया की जो बात कर रहे हैं वो क्या है। तो ये कॉन्टेस्ट है, ये कंपटीशन है, देश भर के पाठशाले स्कूल रजिस्टर कर सकते हैं और 3 कार्य हैं, 6 महीने ये कैंपेन चलेगा। 3 कार्य हैं जो स्कूलों को करने हैं। नंबर 1, जब वातावरण की बात कर रहे हैं तो उनको पेड़ लगाने हैं, सैपलिंग्स लगाने हैं हर जगह। नंबर 2, स्वच्छता की जब हम बात कर रहे हैं तो उनको जाके अपने इलाके को साफ सुथरा रखना है। और जब हम हेल्थ की बात करें तो उनको जाके देखना है कि जो बच्चे हैं जो उनके इलाकों में हैं उनको मच्छरों से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। जी, ये जो 3 लक्ष्य हैं, अगर आप स्कूल में होते क्या आप इनमें भाग लेते? जी बिल्कुल लेता। और आप क्या करते? सबसे पहले तो ये अभी यहाँ से जब मैं पीछे देख रहा हूँ तो सब रेट्रोस्पेक्शन में बहुत कुछ समझ में आता है। तो अभी मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जैसे आपने बताया कि अगर हमें बहुत सारे माइक्रो स्टेप्स के बारे में पता हो जो कि हमें लेना है टू गेट टू द फ्यूचर दैट वी वांट टू, वो जो परसिवरेंस है वो रह जाता है। 2-3 ले लेते हैं, चौथा नहीं आता या 5वां नहीं आता। आई थिंक वी हैव टू डिग डाउन। हमें ये देखना है कि why are we the way we are, हम इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। हमें पता है कि it's so important but still we don't do it. To understand, we need to understand the importance of cooperation, and I'm saying it, I'm emphasizing it again and again because we somehow think स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ, नंबर 3 आओ। तो हम लोग हार्ड वायर्ड हैं ये सबको पीछे छोड़ के खुद आगे जाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता है कि ये जो सेल्फिशनेस है ये कोऑपरेशन के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि एक करती है। और अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो हमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है वो बहुत सेल्फिशनेस, अगर हम अपने बारे में सोचे तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम एक कम्युनिटी के बारे में सोचे तो वो डिलेड होता है, तो हम वो स्टेप नहीं ले पाते। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है व्हिच इज मच मोर देन द सम ऑफ ऑल दीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट इज समथिंग दैट all of us need to understand। राज जी, जो मेंटेनेंस की बात करते हैं या उसको जैसे सैपलिंग्स की अगर बात करेंगे तो उनकी अपकीप करनी है। अगर आप कहीं शौचालय बना रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में भी बहुत से इलाके हैं जहां लोगों ने शौचालय तो बनाए हैं पर उसके बाद उनका ना तो वो इस्तेमाल करते हैं ना उनकी देखभाल करते हैं। कई बार वो जो शौचालय हैं वहां स्टोर रूम के तौर में उनको परिवर्तित किया गया है। जी, तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये
डिपेंड कर, ये बहुत हद तक इस वजह से है कि हम जो ये सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, हम कर क्यों रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आके बताना चाहूंगा कि मैंने 10 बनाए और मैंने उसका क्रेडिट ले लिया और मैं अपने रास्ते पे निकल गया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये चीज शुरू क्यों हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे आपने बताया, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन फिर भी हम लोग कोई स्टेप नहीं लेते क्योंकि शायद हम जो हार्ड वायर्ड है वो ये है कि अगर हम कुछ गर्म चीज छूते हैं तो हाथ हम हटा लेते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है इट इज नॉट इंस्टेंटली, हम लोग उसको समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि होगा तो होगा, लेकिन ये दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। तो ये जो मानसिकता है, ये दिस इज द रूट कॉज, और अगर ये समझ में आएगी तो जितने चीजें बनाई जाएंगी उसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा जाएगा। Right, so I'm just going to recap for you in case you're just trying to figure out करना क्या है इसमें, what is the process. पांच steps हैं. Number 1, पहले सबको रजिस्टर करना है. स्कूल्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे आइए ndtv.com/behtarindia, वहां स्कूल्स को रजिस्टर करना है. उसके बाद जो हेल्थ फेज है, स्वास्थ्य का फेज है, उसके लिए फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे और जितने भी स्कूल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फंड्स वो कलेक्ट कर पाते हैं उनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे. फिर क्लीनिंग अप ड्राइव होगी, अपने इलाके को क्लीन अप करना, स्वच्छ रखना, देखना कि कैसे कैसे क्लीन किया जा सकता है, उसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे. अगर किसी तरह से भी आप मेंटेनेंस के बारे में सोच सकें, जो भी एरिया आपने क्लीन अप किया है वह उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए, तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. और फाइनली प्लांटेशन ड्राइव होगा, प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए भी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. दिस इज द रफ स्ट्रक्चर, मिस्टर नायर. दिस साउंड्स सेंसिबल टू यू? एंड द इशू ऑफ मेंटेनेंस एंड गिविंग बोनस पॉइंट्स टू मेंटेनेंस perhaps is something that we should be thinking about in all campaigns that we are doing. So first is that I'd like to issue a challenge to all of you. Under Sampark Foundation, we have 50,000 rural schools in Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand. On behalf of those schools, I commit that we will be part of this competition. So you better start running. Great. So it is not just for city kids. Our rural children, for the first time, will give you a competition which you have not seen before. Oh, that's the spirit. And so 50,000 schools are going to take part in this. We have 50,000 schools. They don't have net connectivity. They don't have power. So we will see we will work with them and figure out how do we do the registration process. You don't only have to log on the net. It's a valid point. We should make that clear. So if we don't have net connectivity, we'll find other ways to register. But my commitment is that our 50,000 schools will participate to the extent they can participate, technology enabling, but we will try and get them. But what I am keen is that when the awards are given, our school is the one which wins the award. So that's the challenge which I'm throwing to all the city schools. Very long time, with all our ignorance, we have been working against it to change the definition of it. But then this is the time when we can actually make a better India and we can become a better human being. Yeah. All right, so we're nearly at the end of this, but I have to say 6 months, you need a cleaner India, you need a healthier India, and you need a greener India. And what's one of the best ways of doing that? Harness the power of the young, unleash the young, get them to help us in doing this, and make it a challenge for them, make it a game for them, make it a contest between them. Because whoever wins or whoever loses, as was just said, at the end of the day, the country will be better off. India will be a better India. And that's what this is all about. So do join in, do register, do log on, do send in your application through other forms. Let's have a lot of fun in doing this. And
थे आपका इस कन्वर्सेशन में एनडीटीवी का जो एक इनिशिएटिव है उसके साथ आप जुड़े। आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि इग्नोरेंस वाली बात, हम दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं लेकिन फिर भी इग्नोरेंस के चलते कई सारे इनिशिएटिव है उन पे हम हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, आप किस तरह से अपील करेंगे जिसके ज़रिए एक बेहतर इंडिया बन सके? जैसा मैंने कहा कि हमारे जो एक्शंस हैं वो इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं हमारे लिए, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इंडिविजुअली। आप देखें तो वी आर एज स्मार्ट एज एनीबडी इन द वर्ल्ड इंडिविजुअली, लेकिन हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो फिर हमारी जो काबिलियत है वो कम हो जाती है, क्योंकि फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं ही अकेला क्यों करूं, या अगर वो नहीं करेगा तो फिर मैं क्यों करूं। इस टाइप के जो सवाल हैं हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे जहन में आते हैं, और फिर हम नहीं करते। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही देखा जाए तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंस्टेंटली आप देख नहीं सकते। तो आपको लगता है कि ये जो इसके जो भी डिज़ास्टर्स चीज़ें होंगी वो किसी और के साथ होंगी, आपके साथ नहीं होंगी, इसलिए आप उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला ये जानना है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि हम वी आर सो मच वाइड टू अंडरस्टैंड, कुछ भी हम इस पर्सपेक्टिव में रखते हैं कि हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा तो ये हमें समझ में आता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी और के साथ नहीं होगा, आपके साथ ही होगा, और आप ही कुछ करेंगे तो कुछ होगा, और आप कुछ करेंगे तो ही ये चेंज आ सकता है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड, वेरी ऑनर्ड टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। बिजी शेड्यूल्स के बावजूद आप इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं, क्या हम फिल्मों में आपकी इनिशिएटिव से जुड़ी कुछ चीज़ें देख पाएंगे? नहीं, मैं फिल्में इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है। इसके मतलब कोई और रीज़न नहीं है। आप मुझे थिएटर में डालें और 500 रुपये दे तो भी मैं एक्टिंग करूँगा। आप मुझे थिएटर में भी काम नहीं दें, मैं अपने आप शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा, मैं उसमें भी बड़ा खुश रहूँगा, तो वो अलग बात है। लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपको ऐसे स्टेजेस पे अगर लोग आपको सुनने लगते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ बोलो जो आप अंदर से फील करते हो। You are convinced and you want that change to happen. So that's why, hence मैं इस कैंपेन से जुड़ा हूँ, क्योंकि because this is something that I really personally feel for it, and I think it's high time for all of us to understand how important it is. ये ऐसा नहीं है कि किताबों वाली बात है और किसी और के साथ होगी, बाद में होगी, ये बहुत ही आसपास हो रही है और हम इग्नोर किए जा रहे हैं, and I think this is a very good start. Lastly, I want to know, आजकल आप कितनी फिल्मों के साथ आप बिजी हैं? कितने फिल्मों के साथ बिजी हो? कभी गिना नहीं मैंने, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 फिल्में जी। चंदा मामा दूर के और इन सारी फिल्मों के साथ आपने स्टार्ट कर दिया है काम करना, रास्ता के साथ? नहीं, मैं एक जब शूट कर रहा था तो एक ही फिल्म पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ 4-5 फिल्में हैं जो शूट करनी है आगे। ओके। एंड रास्ता में कहा जा रहा है कि हॉलीवुड एक फिल्म है, उससे इंस्पायर्ड एक सीक्वेंस है, इज दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।